Hello friends, welcome to HP Diamond Academy. In this particular lecture, we will discuss about the dihedral group. So let's start our discussion. So the dihedral group is represented as Dn or D2n. Okay, so in some books it is written as Dn, or in some books it is written as D2n. Okay, so we will follow the notation of Dn. Okay, so in this particular lecture. Okay, so dihedral group is nothing but groups of symmetry of a n-sided regular polygon. Okay, so what is a regular polygon? In case of a regular polygon, the sides are equal as well as the interior angles are also equal. Okay, so let us take some example of regular polygon. Regular polygon. Okay, so in this case sides are equal. Sides are equal as well as interior angles. Angles are also equal. Suppose we have a square. Okay, so here sides are equal and the interior angles are also equal. Okay, so this is four-sided polygon. Okay, now we have equilateral triangle. So sides are equal as well as interior angles are also equal. Okay, so this is three-sided polygon. Okay, now we have hexagon. The sides are equal as well as interior angles are also equal. So these are the examples of the regular polygon. Okay, so the dihedral group is nothing but group of symmetry of n-sided regular polygon. Okay, so now there is a term symmetry. So what are the types of symmetry? So let us consider one example of a four-sided polygon. Let us name this as A, B, C and D. Okay, so this is our square. Okay, so we have the types of symmetry as translation symmetry, second one is rotational symmetry, and this is reflexive symmetry. Okay, so in this dihedral group, these two symmetries are being considered. We do not consider this translation symmetry. This symmetry, translation symmetry, is along the line. So let us discuss rotational symmetry and reflexive symmetry. So this is our figure. Okay, so this is our plane. Now let us rotate this with a 90 degree. Okay, so we will reach to this type of representation. So this is A. So we have given a rotation of 90 degree. So this will A will come here. This is A. Now we have this is B, this is C and this is D. Okay. So now let us take a figure like this. Okay. So this is like this. So this is A, this is B, this is C and this is D. Okay. Now we have given a 90 degree rotation. Let us rotate this 90 degree. So this will come like this. So A will come here, B will come here, C will come here, D will come here. So A, B, C, D. Similarly, A, B, C, D. So this type of symmetry is rotational symmetry. Rotational symmetry. So here the rotation is in the plane of the paper. Okay, so this type of rotation is there in the plane of paper. Now let us consider a. Now let us rotate this figure about this axis. Okay, so the orientation of this figure is this one. Let us do the rotation like this about this axis. Okay, so this will be like this. So this B and C will come here and this is A and D will come here. So let us give the rotation along this axis like this. Okay, so A, B, C, D. So this is A, B, C and D. So this types of symmetry is reflexive symmetry. Reflexive symmetry. Okay, we have taken a reflection about this line. Okay, so this is reflexive symmetry and this is rotational symmetry. Okay, now we have the degree of rotation. So this is a four-sided polygon. The subsequent degree of rotation will be theta is equal to 360 upon 4. This is 90 degree. Okay, so the subsequent rotation will be of 90 degree. So now again we will rotate this about the 90 degree. Okay, so this is do the rotation. So this is A, B, C and D like this. Again 90 degree rotation.
So this will rotate like this. So this is A, B, C and D like this. Okay. Now suppose we have a three-sided polygon. Okay. So let us have a equilateral triangle. So here sides are equal as well as interior angles are also equal. So let us name this A, B, C. Okay, so here theta will be, degree of rotation will be 360 degree upon n. So here 3. So elements are generated with subsequent rotation of 120 degree. So let us give a rotation 120 degree. Okay. Let us do the rotation along the plane of paper with a 120 degree. Okay, so here A will come, this is B, this is C. 120 degree. Now again 120 degree. So A will come here like this rotation. So this is A, this is B and this is C. 120 degree rotation. So these type of rotations are rotational symmetry. Rotational symmetry. Now let us take the reflection. Let us take this axis. So about this axis we have to take the reflection. This will be, this point is A, this is B and this is C. So the rotation is about this axis. About this axis we have taken the reflection. So this is reflexive symmetry. Symmetry. We can take any of the axis. Let us do the reflection about this axis. Okay, so C will remain here. C will remain here. So this is C. Now A will come here and this will come B. B will come here. Okay, suppose we take this axis. Let us do the take the reflexive symmetry about this particular axis. So this will be equal to, B will be as it is and A will come here and C will come here. Okay, so this is the basic concept of rotational symmetry as well as the reflexive symmetry. Okay, rotational symmetry is about the rotation is about the plane of paper and reflexive symmetry is rotation about the axis like this. Now let us understand this in depth. Okay, now let us take a four-sided polygon, that is a square. Okay, so let us give so here this is a four-sided polygon. So the elements will be generated by a subsequent rotation of theta is equal to 360 upon 4, that is 90 degree. The elements are generated, rotational elements are generated with a subsequent rotation of theta that is given by 360 upon 4, that is 90 degree. So let us give a subsequent rotation of 90 degree. Okay, so now let us take this figure like this: A, B, C and D. Sorry, this is not like this. A, B, C and D. Okay, A, B, C and D.
So when we give a 90-degree rotation, so it will come like this. Okay, so let us write down here. So this is A. This way we have given a rotation of 90 degree. So A, B, C and D. Again give a rotation 90 degree. This will like this. So A will come here. So this is A, B, C and D. Again rotation. Again rotation, this will be like this. So A will come here like this. So this is A, B, C and D. Okay. Now again give a rotation. So on again so rotation is like this. Again give a rotation 90 degree. This will be like this. A, B, C and D. Okay. So this was our our original element. Okay, this was our original element, and after given subsequent rotation, this is our the final position of the element. Okay, so this is nothing but R0. This is identity, and this is R90. This is R180. This is R270. This is R360. Okay. So after 90-degree rotation, this is our orientation. After 180-degree rotation, this is our orientation. After 270-degree rotation, this is our orientation. And after 360-degree rotation, this is our orientation. So this R0 and R360 is same. So this is nothing but the identity element. Okay, and this is represented as small r. Okay, so single times rotation is a small r. 2 times rotation is r square. 3 times rotation is r cube. So the rotational elements will be, let us write down the elements here. So this is D4. D4 is equal to, so there is R square, R cube, and this is nothing but R to the power 4. 4 times rotation, and this is nothing but identity element, because after 4 times rotation we have reached to the original orientation. So this is R4, and R4 nothing but identity element. So these are the so in D4 we have total 8 elements. So 4 number of elements are rotational one. This is rotational one. Okay, now let us find the elements that are reflexive one. Okay, so 4 number of elements are rotational one and other 4 are reflexive one. So let us find the reflexive one. So this is the original position of this object. Now let us give a rotation about this axis 180 degree. Okay, so this will be like this. So this is B and C will come here, and this is A and this is D. Okay, so this is nothing but S. Okay, now let us give a rotation now on this element. This is our element that is of reflexive one. Now on this element let us give a rotation 90 degree. Okay, so this will be like this. On 90 degree rotation we will rotate this. So A will come here. So this is A, B, C and D. Now let us, this is SR. Now again give a rotation 90 degree. So this will be SR square. Okay, so A will come here, A, B, C and D. Again give a rotation 90 degree. So this will be SR cube. So A is here. So now let us take A here. So A, B, C and D. Okay, now let us give again rotation 90 degrees. So this is SR4. SR4. So this is nothing but, so A, B, A will come here, na? B will come here. A, B, C and D. Okay, and SR4 is nothing but S, because R to the power 4 is identity. Okay, so this is S. So this S is, so this is our, so this is also S and this is also S. So SR4 is nothing but S. So the elements are S, SR
SR square and SR cube. Let us write down. So this is SR square and SR cube, because S to the power R4 is nothing but S, because R to the power 4 is RNT. S time is S time E is S. So this is nothing but this particular element. Okay. So we have 4 number of elements are rotational one and 4 numbers are reflexive one. समझ में आ रहा है? These are the rotational elements and these are the reflexive elements. So total 8 number of elements are there. So the 4 number are rotational one and other 4 are reflexive one. As simple as that. Okay. अब देखो यहाँ पे हमने 180 डिग्री मतलब रिफ्लेक्शन लिया, ठीक है, अबाउट दिस पर्टिकुलर एक्सिस, बिकॉज दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द रिफ्लेक्सिव सिमेट्री. वी टेक ए सिमेट्री अबाउट द एक्सिस. तो इसके बाद हमने एक बार और क्यों नहीं किया इसको, ठीक है, तो इसको जैसे समझो, देखो एस हमने लिया ना, तो एक बार और अगर हम इसमें रिफ्लेक्शन कर दें, ठीक है, लेट अस रोटेट दिस वन मोर टाइम 180 डिग्री. ओके. सो इसमें आने से क्या हो जाएगा, देखो ए डी है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा ए डी, ये हो गया बी एन सी, तो ए बी सी डी, तो ये ओरिजिनल एलिमेंट आ जाएगा, आर जीरो आ जाएगा. समझ में आ रहा है? तो इसका कोई मीनिंग नहीं है. दैट्स वाई वी आफ्टर टेकिंग वन रिफ्लेक्शन वी स्टार्ट अगेन रोटेशन. ठीक है, एक बार रिफ्लेक्शन लेने के बाद फिर से उसमें रोटेशन करना है. ठीक है. तो एस में फिर से रोटेशन करोगे तो कौन सा एलिमेंट आएगा, एस आर. एक बार और रोटेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, एस आर स्क्वायर. वन मोर रोटेशन विल गिव एस आर क्यूब. वन मोर रोटेशन विल गिव एस आर टू द पावर एस आर फोर. और आर फोर क्या है, आइडेंटिटी है, तो एस टाइम सी क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा. तो ये क्या हो जाएगा, ओरिजिनल एलिमेंट आ गया ना एस. तो हमारा एलिमेंट क्या है गया, तो ये तो ओवरलैप हो रहा है ना इससे और इससे, तो हमारा एलिमेंट्स हो जाएगा जो रिफ्लेक्सिव वाला है एस आर स्क्वायर एस आर क्यूब. तो दीज आर द रिफ्लेक्सिव वन एंड दीज आर द रोटेशनल वन. एज सिंपल एज दैट. देखो इसमें क्या करना है, ऑर्डर जो हमारा आ गया ना, ऑर्डर ऑफ D4, ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, बिकॉज ऑर्डर ऑफ DN क्या होता है, 2n. तो यहाँ N4 है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा. मतलब 4 रोटेशनल वाला हो गया और 4 रिफ्लेक्शन वाला हो गया. समझ में आ रहा है? अब देखो ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट. देखो रिफ्लेक्सिव वन का जो ऑर्डर होता है ना हर एक एलिमेंट का, वो 2 होगा. समझ में आ रहा है क्यों होगा? लेट अस कंसिडर द ओरिएंटेशन ऑफ दिस डस्टर लाइक दिस. ठीक है, तो एक बार रोटेशन करेंगे इस एक्सिस के अबाउट. ओके, लेट अस कंसिडर दिस इज ए एक्सिस. ठीक है, इसके अबाउट रोटेशन करना है. ठीक है, तो ये डस्टर है, ये एक ओरिएंटेशन है. एक बार रोटेशन इस एक्सिस के अबाउट करेंगे तो ऐसे होगा, और एक बार और रोटेशन करने पे क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा. तो इसका मतलब ओरिजिनल पोजीशन में आ गया. तो 2 बार रोटेशन करने पे क्या आ रहा है, ओरिजिनल पोजीशन में आ रहा है. तो जितने भी रिफ्लेक्सिव एलिमेंट्स होंगे ना, उसका जो ऑर्डर होगा वो 2 होगा, बिकॉज एस पे एक बार और रोटेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी. जैसे देखो ये एस है ना, इस पर एक बार और रोटेशन किया, इस पर देखो एक बार रोटेशन करने पे क्या आ जाएगा, ए डी बी सी है ना, 180 डिग्री. और एक बार और करो इसमें, एक बार और करने पे क्या हो जाएगा, एक बार और करने पे ए डी बी सी. तो ये वाला एलिमेंट फिर से आ गया ना, 2 बार रोटेशन करने पे वो एलिमेंट फिर से आ जा रहा है. तो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा. तो जितने भी रिफ्लेक्सिव वाले एलिमेंट्स हैं उसका ऑर्डर 2 होगा. ठीक है, नाउ रोटेशनल वाला डिस्कस करो. रोटेशनल कैसे निकालोगे, देखो r टू द पावर 4 क्या है, आइडेंटिटी है. इसका मतलब r का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा. समझ में आ रहा है? इसका ऑर्डर क्या होगा, 4 होगा. r का ऑर्डर 4 होगा, क्योंकि इस एलिमेंट पे 4 बार रोटेशन करने पे वो आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा. समझ में आ रहा है? इस एलिमेंट पे 4 बार रोटेशन करने पे आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा. दैट्स वाई ऑर्डर ऑफ r इज 4. ठीक है, अब आर स्क्वायर कैसे निकालोगे, है ना, आर स्क्वायर को 2 टाइम्स ऑपरेशन करो, क्या आ जाएगा, R4. तो ये आइडेंटिटी आ गया. तो आर स्क्वायर टू द पावर 2 इज इक्वल टू आइडेंटिटी, मतलब ऑर्डर ऑफ आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2. ठीक है, देखो इसका एलिमेंट यहाँ, ऑर्डर यहाँ पे लिख लो. D4 के एलिमेंट्स क्या है, आर स्क्वायर, आर क्यूब, R4. ये आइडेंटिटी हो गया, एस आर स्क्वायर और एस आर क्यूब. ठीक है, तो ये इसका एस का ऑर्डर क्या है, 2 है. रिफ्लेक्सिव वाले एलिमेंट्स का ऑर्डर हमेशा 2 होता है, ये हमेशा याद रखना, बिकॉज 2 टाइम्स रोटेशन एक्सिस के अबाउट करने पे सेम ओरिएंटेशन आ जाता है. ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा. ठीक है, आर का ऑर्डर क्या है, 4 है. आर स्क्वायर का क्या है ऑर्डर,
आर स्क्वायर का ऑर्डर 2 आ गया। अब आर क्यूब का क्या आएगा, देखो आर क्यूब को 2 बार ऑपरेशन में लगाओ, तो क्या हो जाएगा आर टू द पावर 6, मतलब आर टू द पावर 4 टाइम्स ऑफ आर टू द पावर स्क्वायर, और आर टू द पावर क्या आइडेंटिटी है, तो ये आर स्क्वायर आ गया। अब आर टू द पावर क्यूब टाइम्स ऑफ आर टू द पावर क्यूब टाइम्स ऑफ आर टू द पावर क्यूब, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या है, आर स्क्वायर टाइम्स ऑफ आर टू द पावर क्यूब, है ना। तो ये आ गया तुम्हारा आर टाइम्स ऑफ आर टू द पावर 4, तो ये आर आ गया। अब उसके बाद आर टू द पावर क्यूब टाइम्स ऑफ आर टू द पावर क्यूब टाइम्स ऑफ आर टू द पावर क्यूब टाइम्स ऑफ आर टू द पावर क्यूब, 4 बार ऑपरेशन लगाने पे क्या होगा, आर टाइम्स ऑफ आर क्यूब, तो आर टू द पावर 4, ये हो गया आइडेंटिटी, ठीक है। तो आर टू द पावर क्यूब टाइम्स ऑफ 4 इज इक्वल टू आइडेंटिटी, मतलब ऑर्डर ऑफ आर क्यूब इज इक्वल टू 4। तो ऑर्डर ऑफ आर क्यूब क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है। और ऑर्डर ऑफ डी 4 क्या है, इज इक्वल टू 8। समझ में आ रहा है। सो ग्रुप जो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इज डिवाइडिंग द क्लियरली डिवाइडिंग द ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ये भी यहाँ से प्रूफ हो जाता है। समझ में आ रहा है। तो दिस इज एन रोटेशनल और एन रिफ्लेक्शन। समझ में आ रहा है। अब देखो इसको मैथमेटिकली कैसे करोगे, देखो ओके। सो देखो रिफ्लेक्सिव वाले जितने एलिमेंट्स हैं ना, सबका ऑर्डर 2 है। ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ रिफ्लेक्सिव सिमेट्री, रिफ्लेक्सिव सिमेट्री वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, इज 2, ठीक है। तो एस का ऑर्डर एस स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी एस आर टू द पावर 2 इज इक्वल टू आइडेंटिटी एस आर क्यूब टू द पावर 2 इज इक्वल टू आइडेंटिटी। देखो इसको कैसे शो करेंगे, देखो एक बार रिफ्लेक्शन लेने पे क्या हो गया, एस आ गया, ठीक है। एक बार और इसमें लो, एक बार और इसको रोटेट करो 180 डिग्री से, तो क्या आएगा, देखो ये कहाँ पे आ जाएगा, ए यहाँ पे आएगा। इस पे कर रहे हैं ना, इस पे एक बार और रिफ्लेक्शन ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा ए डी, ये हो गया बी और सी, तो ए बी सी डी, ये क्या हो जाएगा आइडेंटिटी। आइडेंटिटी आ गया ना, आर जीरो के इक्वल आ गया। तो एस टू द पावर 2 इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ठीक है। अब देखो, अब इसका देखो एस आर टू द पावर 2 इज इक्वल टू आइडेंटिटी, कैसे शो करोगे, देखो एस आर टू द पावर 2 इज इक्वल टू, इसमें क्या होगा एस आर टाइम्स ऑफ, इसमें ऑपरेशन लगेगा स्टार ऑपरेशन एस आर, ठीक है। तो एस आर के ऊपर 1 टाइम रिफ्लेक्शन और 1 टाइम रोटेशन, ठीक है। तो 1 टाइम रिफ्लेक्शन लेने पे क्या आएगा, देखो देखो इस पे 1 टाइम रिफ्लेक्शन मतलब इस एक्सिस के बाद उसको 180 डिग्री रोटेट कर देना है। तो यहाँ पे हो गया बी, यहाँ पे हो गया ए, और ये सी और डी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब एक टाइम देखो एस आर और इसमें आया ना, मतलब एक रिफ्लेक्शन और एक रोटेशन, तो एक रिफ्लेक्शन ऐड कर दिया हमने इसमें, ठीक है। और उसके बाद एक रोटेशन और आएगा इसमें 90 डिग्री पे, ठीक है। तो देखो एक बार और रोटेशन, तो इस पर रोटेशन करना है, तो इससे क्या हो जाएगा, बी यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे ए आ जाएगा, ए बी सी एंड डी, ठीक है। तो ये क्या है, नथिंग बट आर जीरो, आर जीरो ये आइडेंटिटी आ गया। इसका मतलब एस आर टू द पावर 2 इज इक्वल टू आइडेंटिटी। एस आर टू द पावर 2 मतलब एस आर के ऊपर एक रिफ्लेक्शन और एक रोटेशन, तो एक रिफ्लेक्शन ये हो गया और उसके ऊपर एक और रोटेशन ऐड कर दी, तो क्या हो जाएगा एस आर स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी। समझ में आ रहा है। अब देखो इसके ऊपर करो, एस आर स्क्वायर के ऊपर करो, ठीक है। तो एस आर स्क्वायर टू द पावर 2, इसका मतलब क्या हो गया, एस आर टाइम्स एस आर स्क्वायर, सॉरी एस आर स्क्वायर टाइम्स ऑफ एस आर स्क्वायर, ठीक है। तो एस आर स्क्वायर के ऊपर क्या होगा, एस आर मतलब एस आर स्क्वायर के ऊपर 1 रिफ्लेक्शन और 2 रोटेशन, आर स्क्वायर है ना, 2 रोटेशन, ठीक है। तो एक रिफ्लेक्शन इसमें ऐड करो, तो क्या आ जाएगा, देखो एक रिफ्लेक्शन करना है, मतलब इस एक्सिस के बाद 180 डिग्री रोटेट कर देना है। तो यहाँ पे सी आ गया, यहाँ पे बी आ गया, यहाँ पे डी आ गया, यहाँ पे ए आ गया, ठीक है। एक रोटेशन डालो इसमें 90 डिग्री, क्या आ गया, देखो 90 डिग्री में क्या आएगा, देखो ए यहाँ पे आ जाएगा, ए ए बी, फिर सी यहाँ पे आएगा और डी यहाँ पे आएगा। एक बार और रोटेशन करो 90 डिग्री, तो क्या आएगा, देखो
एक बार और रोटेशन, तो क्या होगा ए बी सी एंड डी, क्या आर जीरो आ गया ना, आर जीरो इज इक्वल टू आइडेंटिटी, मतलब एस आर स्क्वायर टू द पावर 2 इज इक्वल टू आइडेंटिटी। सिमिलरली यू कैन डू फॉर दिस वन, एस आर क्यूब के बारे में कर सकते हो, और एस आर फोर तो एस है, ठीक है, तो एस का हमने देखा ना, एस स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो जितने भी एलिमेंट्स अब रिफ्लेक्सिव सिमेट्री वाले सबका ऑर्डर 2 है, समझ में आ रहा है, और रोटेशन वाला तो हम लोग देख ही चुके हैं, ठीक है। अब इसको मैथमेटिकली कैसे करोगे, देखो देखो डायहेड्रल ग्रुप में जो ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन इज गवर्न बाई आर टू द पावर आई इंटू एस इज इक्वल टू एस आर टू द पावर माइनस आई, समझ में आ रहा है। तो देखो एस स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ये हमने देखा है, एस आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, एस आर स्क्वायर इज इक्वल टू एस आर टाइम्स ऑफ एस आर, ये हो जाएगा एस टाइम्स ऑफ आर एस इंटू आर, ठीक है। अब देखो आई इज इक्वल टू 1 रखो, तो आर इंटू एस इज इक्वल टू एस आर माइनस 1, तो आर एस की जगह पे ये रखो, दिस इज इक्वल टू एस टाइम्स ऑफ एस आर माइनस 1 इंटू आर, दिस इज इक्वल टू एस टाइम्स ऑफ एस, दिस इज एस स्क्वायर, और आर माइनस 1 इंटू आर, तो दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी, दिस इज आइडेंटिटी, एस आर स्क्वायर क्या आ गया, आइडेंटिटी, दिस वी आर प्रूविंग मैथमेटिकली, ठीक है। अब देखो एस आर स्क्वायर, इसका पावर 2 ले लो, तो ये क्या हो जाएगा, देखो एस आर स्क्वायर टाइम्स ऑफ एस आर स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, देखो एस टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर एस इंटू आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर एस कैसे निकालोगे, यहाँ पे देखो आई इज इक्वल टू 2 रखो यहाँ पे, तो आर स्क्वायर एस इज इक्वल टू एस आर माइनस 2, तो आ जाएगा एस टाइम्स ऑफ एस आर माइनस 2 टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर, दिस इज एस स्क्वायर आर माइनस 2 और आर स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी आ गया, इसका मतलब एस आर स्क्वायर टू द पावर 2 इज इक्वल टू आइडेंटिटी, समझ में आ रहा है, ये भी आइडेंटिटी आ गया। अब एस आर क्यूब का देखना है, देखो एस आर क्यूब का पावर 2, दिस इज एस आर क्यूब टाइम्स ऑफ एस आर क्यूब, दिस इज इक्वल टू एस आर क्यूब इंटू एस इंटू आर क्यूब। देखो यहाँ पे आई इज इक्वल टू 3 रखो, तो आर क्यूब इंटू एस इज इक्वल टू एस आर माइनस 3, सो दिस इज इक्वल टू एस टाइम्स ऑफ एस आर माइनस 3 टाइम्स ऑफ आर 3, तो एस स्क्वायर आर माइनस 3 टाइम्स ऑफ आर 3, दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी, दिस इज आइडेंटिटी, मतलब एस आर क्यूब टू द पावर 2 इज इक्वल टू आइडेंटिटी, मतलब ऑर्डर ऑफ एस आर क्यूब इज इक्वल टू आइडेंटिटी, समझ में आ रहा है। तो रिफ्लेक्सिव वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उसका ऑर्डर 2 होगा, तो ये हमने रोटेशन करके भी, रोटेशन एंड रिफ्लेक्शन दोनों करके देखा और मैथमेटिकली भी देखा यूजिंग दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन। ओके, सो वी विल डिस्कस फर्दर इन नेक्स्ट पर्टिकुलर लेक्चर। थैंक यू।